Okay guys, Hi guys, we are going to airport with एक इंसान and 1 to 4 लगेज लेके हम लोग जा रहे हैं I'm going. और मैं इसको भगाऊंगी क्योंकि उसके बाद मुझे अलोन टाइम मिलेगा और मैं पूरा घर साफ करूंगी साफ करूंगी So basically, the winter break has started plus internship break, but right now it's only winter break. So I'm going to Chennai, which is my nanihal, for Christmas and New Year's, which I've never spent outside of Chennai. No, which I've never spent without my maternal folks. So I'm going to see them. So I'm going to the airport, and these people have very kindly come to drop me because I'm overweight. I'm not talking about myself, the luggage. And yeah, this is the fit, and we're going. Yeah. Bye. Miss me for a month. No, why? Miss me. Yeah. And I'm traveling with 2 other people. Not important, irrelevant. हाँ गाइस, तो जिसके साथ मैं ट्रैवल करने जिसके साथ मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ वो है ये. I'm back. Wow, what a surprise. I am back. Oh, now tell what is our situation. So we were a little overweight. Little? No, I am not little. She is on like 3-4 kgs. I'm on like 2 kgs, which is like almost the same thing. And this is jam packed by the way. I don't want to flash cameras on anyone. ऐसे लग रहा है जैसे फ्री में बट रही थी टिकट्स जाने की कहीं की. ले लो आप. इंडिगो फ्री में बांट रहा था. But we are just hoping that they let us go. And then we're going to have food because I'm really hungry. Do you have food? What did you have? मेथी का थेपला and भिंडी. I'm very hungry, so I'm going to have food. But I feel like I'm not in the mood of giving 1,000 per kg. So let's just hope. Yeah, they same. allow I us. don't have money to give 1,000 per kg. So yeah. Okay, bye. This is the story time of what went down today. Then quickly tell. Length मत बढ़ाओ. Okay, so we got to the airport. I met her and then we vlogged. So you can see that shift and it was a really long line. तो उसके बाद हम लोग एंड में जब पहुँचे हम गेट चेक इन काउंटर 28 पहुँचे और वहाँ पे एक सेकंड Okay, third participant is here. Now we're going to give story time. Come fast. I can't increase the lyrics. Tell fast. Come. So yeah. So the thing is that we reached the airport when we checked in and we told you guys that we were in the line and the line was very big. फिर हम लोग पहुँचे काउंटर नंबर 28 जहाँ हमें पता चला कि मेरा बैग was around 2 kgs overweight and hers was also 1 kg overweight or something. So then we had to remove stuff. तो हमने रोने मत लग जाओ यार, it's okay. अंदर आओ ना. So then we ended up taking stuff out and putting it in another bag and हमने अपना 15 kgs तक कर लिया अपने दोनों सूटकेसेस. हमने वो रखा. उसने बोला हमको the guy at the counter said आपका कैबिन बैगेज भी हम चेक करना चाहेंगे. मैंने बोला हाँ. फिर हमने चेक किया तो mine was 12 kgs. Mine was 12 kgs. अलाउड कितना होता है? 7. और इसका was 8.9 kilos or something. So इसको अलाउ कर दिया. मुझे बोला आपका बहुत ज़्यादा नहीं है. तुम लोग 4-5 कपड़े ऊपर से पहन के नहीं आ रहे थे पहले ही. हाँ ना, वो मैंने बाद में आइडिया दी. ये तो पहले ही कूदने लग गई. Call the authorities. I would like to talk to your manager. तो उसके बाद हम लोग ने निकाला सामान. फिर जैसे तैसे हमने थोड़ा और स्टफ़ किया कहीं ना कहीं इसके चेक इन बैगेज में. मेरे कैबिन से निकाल के हमने ब्लेज़र बाहर निकाला ताकि ये सब हो. हम उसके बाद दूसरे काउंटर चले गए. हम बोला तुम भाड़ में जाओ. और इतनी हड़बड़ी में निकला कि साथ में ब्लेजर की और क्या निकल गया. कच्चा. और फिर बाद में देख रहे कच्चा. और हम ऐसे हंसते हैं, सबको लग रहा है कि हम पिए हुए हैं. हम सरप्राइज्ड है कच्चा. तो अब हम दूसरे काउंटर चले गए जहाँ एक बहुत अच्छी लेडी थी. हम गए उसके पास. लेडीज़ ओनली सपोर्ट. हम गए उसके पास और उसने पूछा अपने दूसरे बंदे को और बोलती है इसका क्या प्रॉब्लम. उसने बोला कि एक्सेस बैगेज. उसको लगा चेक इन का. उसने चेक इन चेक किया. 15 देख के उसने जाने दिया. उसने कैबिन चेक ही नहीं किया. अब देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 और एक और यहाँ भी है. एक और है और एक और यहाँ भी है. कोई दिक्कत नहीं है. अब वो पूरा आंटी उधर से सामान झोले में भर के आए. लेट्स गो.
फिर हम बस लाउंज में बैठे और फिर इसको पता चला कि इसके पास लाउंज एक्सेस भी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. वो मेरा फ्रेंड And this girl who had 2 cards and she was supposed to bring at least one of them with her, and I reminded her multiple times. She's forgotten to bring her cards and then has showed up and she's like, oh मैं तो cards ही नहीं लाई अपने. Wow, thanks. फिर भी हमने इसको बिठा लिया और हमने बात भी कर ली, हमने कॉफ़ी भी लिया और हमने खाना भी पी लिया 2 बार. और मैंने 2 सर्विंग्स ले हाँ, फ्रूट वूट भी खा लिया. अब हम बस वेट कर रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट डिले 3 बार हो चुकी है. आज हम चेन्नई पहुँच जाएंगे. की चीज आते हैं लाइफ. दैट्स इट. इसको मैं 2x पे डालूँगी. अभी करेंटली में हमारी जो फ़्लाइट थी 10:55 की, वो 3 घंटे डिले हो चुकी है और मुझे नहीं लगता हम 4 बजे से पहले पहुँचने वाले हैं. तो हम एयरपोर्ट ही थोड़े चक्कर काट रहे हैं और हम इतने डेस्परेट हैं. हम लाइन में खड़े हो गए और मैं कह रही हूँ ये गोवा की फ़्लाइट है और ये शुभ कह रही है क्या, नहीं नेक्स्ट फ्लाइट है. हम खड़े हैं लाइन में. फिर फाइनली वो जाके पूछे वो गोवा की थी. लुक एट हाउ आई एम ट्रैवलिंग फुल कवर्ड अप बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड. पूछा किसी ने. This is the last and final boarding call for Last Chennai and final passengers call. flight number 6323. Anushka is going to get a subway. It's 12:40. Ayushi, 12:40. 12:20 12:20 and this girl hungry and she has gone. It's not even coming. She's not picking. She say बस 5 मिनट में सैंडविच बन रहा है. हम इधर बोल रहे हैं कि she's gone to the washroom. अब She सैंडविच does लेके not have आएगी 5 minutes. We don't have 5 minutes left. भाई हमारे पास जीवन भर का टाइम था और इसको like अभी लास्ट मिनट में जाके इस सबवे हो जाए जरा. We're getting. We literally asked for the Everyone's flight staring to at us wait. and we're vlogging and this Anushka, We're going to. bhai, is not even cancelled. funny anymore. Oh shit. We can't even go and call her now that we've come Come in. this side, yeah. Anushka, give us some money. Okay, there's a lot of lines on it, so that's okay. Bhai, regardless. We've told them to Why not are we stop. vlog- Like, close. everyone's looking at us while we We've told vlog. her, told the lady to not close. Anushka. Come on. Guys, सब आ चुका है. शर्म नहीं आ रही कितने दो We literally told the lady that she's gone to the washroom and she's coming back with a subway package. ओ बिना बोर्डिंग कार्ड दिखाए. रुकिए इधर आइए. मैंने मेरे फर्स्ट फ्लाइट पैसे किया था बिना टिकट दिखाए. भाग गई अंदर. वो पीछे चिल्लाए. अरे बोर्डिंग down Chennai. Guess who's in Chennai? Namma Chennai. Vanakkam Chennai. Namma is Nam- Namma is Bangalore. Namma Chennai means मेरा चेन्नई. No, it's not. No, Bangalore का thing. Namma बेटा बाप को मत सिखा, बच्चे कैसे पैदा करने होते हैं. ठीक है ना. Okay, see you. This It was is very this innovative. is Dino. This is my brother and he is The best looking brother in the world. 1 second. Yeah. Say, What? how do you feel that you're seeing me after 1 year? Same. And No difference. no, genuinely I'm asking. Okay, tell. Refreshing. Yeah. Yeah. So I'm at my Masi's house. I chilled with my Masi for a bit, my buddy Papa for a bit, my brother for a bit. Then I'm going to see my sister and my Nani Nanu tonight. And then we were just talking about everything and we were just catching up because we were meeting after a year, all of us. So I just ate dosas and then spaghetti and we were just chilling. Then we took a shower and then we spoke again. And then I'm on 4 hours of sleep even here because college work, and when you take some responsibilities you've got to do it. So I'm doing that. Yeah. But it's okay. Okay, so thought of the day is solve bigger problems. Like the thing that I don't like about people in my law school
is that these people, they're too involved in the minuteness of things. I cropped whatever I was saying short because you don't need to know my thoughts right now. But basically, yeah, it's not that deep. It's okay. See my new stickers. This Dino is such a shame. He's gone with his friends out and he's left me and locked me in the house, and now I'm going out. Enough. I want to go and meet my nana. तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. हम जा रहे हैं ख्याति को उठाने रेलवे स्टेशन से. मतलब हम स्टेशन पे ही हैं और हम उसको अभी पिक करने जा रहे हैं. Yeah. Are you excited? No. I am graduation. Yeah. I am in arguably the most favorite place of my whole entire life. And I don't want to record. Oh, I met Khyati and I not record because she was very tired. I'll put her in the video later, but I met my nani and my nana and I'm just sitting with them, and they couldn't come back in a minute, but I had to ask my nanu something and he said yes, and I'm just, and it wasn't even a okay yes, it was a yes, and he shook hands with me. I'm just so, I feel like just finished dinner with my grandparents and helped my nani clean the table. Now she's cutting fruits for me. I'm going to cry. This is life. I don't want to go back anywhere from here. So I'm waiting for Dinu now to pick me up. I finished gossiping with my nani while eating fruits and painting my nails and chilling after dinner with my nani. And on the dinner table, I was sitting and having a geopolitical discussion with my nanu on economics and how markets work. Yeah, basically, just love the life. And now Dinu will pick me, and then he's come, and then I will go and watch Emily in Paris. Now, just you can tell who's the more responsible one between us. It's okay. Dinu, birthday boy, how you feeling? Not my birthday. We're going to cut his cake in the satsang. How you feeling? Very excited. Yeah. Say hi, Nani. Hi, What we did now? you tell me you're at Basque eating our dinner. How was the dinner? How was the dinner? Very good. Nanu, say hi. Say hello. Where is she? Arey, no one's there. You just have to say hi to the video. Oh, hi. Say hi. Hi. To the video. Yeah. Now we're going back. I was just completing my assignment while eating dinner and annoying everyone with my tick typing, but it's okay. We ball. Oh. Okay, so I am here and I'm just doing some planning and seeing my syllabus or whatever, and something happened today and it wasn't pretty at school, at work, at college basically.
And I just think, and the thought of the day is, it didn't happen today, it happened yesterday. Yesterday I was crying about it, but today I have a little bit of perspective, and sometimes it is not about right or wrong. It is about what you make the other person feel. If the other person is not happy and is hurt by what you said, even if what you said was right or wasn't, it wasn't your intent to hurt them, and the way they reacted might not be justified to you, it's okay. Because if you're someone who wants to make impact, if you're someone who wants to do better for the world, you need to take everyone with you and move forward. And for that, you mustn't get into the details of, oh, but what I said was right, oh, this is right. No, sometimes it is just being humble enough and just say sorry because you've hurt the other person. It's okay. It doesn't matter. Yeah. My mom and sister are here, but I will not show you their face. Next video. Wait for it. By then my papa will also come. And right now I'm taking Shobha and Anushka for shopping. Then I'm going to get them home. Then they're going to go back. I'm going to drive. हर वीडियो में मैं बस हंस रही होती हूँ, बस हंस रही होती हूँ। मैं बाल ठीक कितने जल्दी बोल, मेरा वीडियो मत बढ़ा। अभी हम कहाँ हैं? हम हैं तीनगर। गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, गुरुद्वारा चाहिए। हाँ, और फिर अभी हम गए थे पोती, फिर हम जाए नंदी, फिर हम जाए रामराज की। अनुष्का की शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अनुष्का को एक जगह से लेनी नहीं, हमारी बात उसको सुननी नहीं। तब हम बोल रहे हैं कि जान से लेनी है ताकि अलग अलग बैग बिल बने। हाँ, बस अब आपको मिलते हैं जब हम शॉपिंग खत्म कर लेंगे। 12,000 का धक्का लगा के आई है अपने। जोमेटो आ चुका है मेरे पास। हम अब जा रहे हैं चुका है मेरे घर। पास। ये सारी शॉपिंग है, ये देखो 4 बैग भर के 4 घंटे नहीं, कितना 3 घंटे। और भाई मुझसे नहीं लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा। हाँ, तो वो 1 घंटा नहीं हुआ था ना, तो मेरे को 5 मिनट पे थोड़ी नहीं, वो 5 मिनट में भी लेते, बट मैंने थोड़ा धीरे चलो भैया, थोड़ा अपने इस पे रहो, लेफ्ट में। जो स्पीड इस ड्राइवर के साथ बहुत स्ट्रेसफुल है, और इस शॉपर के साथ आना बहुत स्ट्रेसफुल है। क्यों भाई, मैं अच्छी गाड़ी नहीं चला रही हूँ। देख पगला जाता, गैसोलीना में ऐसा गाड़ी चलाने लग गई। बट यस, वी आर गोइंग टू रिद्या's प्लेस नाउ। खाना खाएंगे नानी घर। रिद्या का ही है ऐसा क्या, नानी का घर क्या नहीं होता। खाना खाएंगे। हाय गाइस, तो मैंने इन लोगों को शॉपिंग करा ली, भेज दिया वापस। फिर मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ अपने बाल कटवाने और आईब्रोज बनवाने गई ताकि मैं इंसान लगूँ। और अब हम जा रहे हैं नानी घर वापस, और ये सारे कजिन्स और हीर का मिलाप होगा थोड़ा, और फिर मैं बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी।